नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली एंड वार्मली वेलकम। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी रिटायरीज मित्रों तक जाए और गवर्नमेंट और पब्लिक एट लार्ज तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का विस्तार होता है और ये हमारी मदद होगी। साथियों, बैंक पेंशनर्स के विषय में मैं लगातार आपको वीडियो बनाता रहता हूँ और एक्टिविस्ट के रूप में लगातार मैं काम करता रहता हूँ। आपने काफ़ी दिनों से ये देखा होगा और आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि अगर कोई आर्थिक सहयोग करना चाहें तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम ठीक लगता हो, अच्छा लगता है तो आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। डिटेल आपको बता देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में नंबर 1 कमेंट में आप देखें डिटेल, वहाँ डिटेल पड़ी रहती है। कमेंट का पहला जो कमेंट है उसी में मैं फिर भी बोल देता हूँ एक बार। RAJESHKUMARTYAGI, राजेश कुमार त्यागी। SBI अकाउंट नंबर 3896687761। दोबारा 3896687761। IFSC कोड CBI N0 285097। CBI N0 285097। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौशाम्बी KAUSHAMBI कौशाम्बी गाजियाबाद मेरा फ़ोन नंबर है। 8588898205 8588898205। तो ये मैंने डिटेल बोल दी आपको और वैसे कमेंट के सेक्शन के पहले कमेंट में ही मिलेगी आपको डिटेल। स्टेट बैंक की न्यूज़ है। स्टेट बैंक का जो केस चल रहा है, उमेश शर्मा जो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स हैं उन्होंने 15/3 में ही भेजी है डिटेल। वो कहते हैं व्हाट नेक्स्ट। थोड़ा व्यवधान आ रहा है, 1 मिनट होल्ड करें। हाँ, व्हाट नेक्स्ट। Just to recall, the GOP under the guidance and leadership of our late Sri PPR Upadhyay, retired GM, had filed 2 writ petitions before the Honorable Delhi High Court on the 14th September and 17th September covering following 4 issues. Number 1, uniform 30% payment of family pension instead of then prevailing 3 rates with 15, 20 and 30%. Number 2, 100% DA neutralization to pre-2002 pensioners. Number 3, restoration of 50% pension since 1st March 1999. Number 4, pension updation. ये 4 इशू थे उनके। As already aware that after restoration of 50%, the only issue remaining pending are retrospective effect to 50% and pension updation. These issues would be taken up in the next hearing on 2 May 24, 2 मई की तारीख है। Incidentally, issue of pension updation was once in focus during the hearing before the division bench of Honorable Justice Mr. Sanjeev Khanna, since elevated to Supreme Court. When Bank Council wanted court to dismiss our claim for pension updation since there was no such clause in SBI employees pension regulations, our council countered by seeking attention of the court to Supreme Court order in V. Kasturi versus SBI and pleaded that if court disagree with the Supreme Court opinion, page 16, then record the order
so that we approach higher court, and if yes, then allow it for arguments. Court agreed and brushed aside the bank's objections. We have very strong case thanks to its architect late Sri Upadhyay, who tirelessly worked for us all sacrificed his life. एक्सपायर हो गए वो बीच में, जैसे सिंगला जी हुए ऐसे ये भी हो गए, जैसे मित्तल जी हुए कंटेम्प्ट कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक वाले में, ये भी हो गए. It is so unfortunate that he is not here to see how his efforts have benefited lakhs of SBI pensioners. We also miss presence of our late Sri V.C. Malhotra, retired GM Lucknow, who helped us tremendously in raising funds when we had nothing in our pocket to even file the petition. Also acknowledge support from our Himachal friends, namely late Sri M.M. Hastir and Mr. S.K. Gupta. How this cause is given encouraging push by Sri Nirmal Sharma ji. Also group led by Sri K.M. Trivedi, retired CGM, and many other warriors have helped us in our journey so far. It has been a tiring and trying journey but fruitful. I, on behalf of GOP, express our gratitude to each of you for support, guidance and encouragement. Remain grateful. मिस्टर उमेश शर्मा, GOP, और ये 15 मार्च का है. एक मैसेज और है मेरे पास, इसको भी मैं अभी सिम बता रहा हूँ. ये फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर S17025 ऑफ 1986 अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समृद्धि भवन नंबर 1, स्टैंड रोड, डी ब्लॉक, 5th floor, कोलकाता. All letters to be addressed to the General Secretary, number 79/2324, Deputy MD HR and CDO, State Bank of India, Corporate Center, मैडम कामा रोड, मुंबई. ये है. ये कहते हैं 15/3 का ये मैसेज. ये सर, पेमेंट ऑफ एक्सक्रेशिया वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड दैट IBA वाइड देयर लेटर CIR HIR 2023-24 12th BPS 0903 dated 30th March 24 has advised members banks, including SBI, that government has approved ad hoc release of revised salary structure under 12th BPS agreement. Similarly, banks have been advised to release ex gratia to old retirees from November 22 as per the said BPS. In this connection, we have to advise that in November 22, a large part of SBI pensioners were getting 40% as pension. Similarly, the DA in November 22 was paid on the structured basis, as the issue of 50% pension to all the SBI retirees has been considered by the government, and banks has already put in place revised regulations. We expect bank will pay ex gratia on notional fitment at the rate of 50% pension. Similarly, the 100% neutralization has also been implemented, although from October 23, but as these old grievances have been settled, we naturally believe that this will get reflected in the ex gratia calculations payable to SBI. SBI retirees have suffered for a long time. We request you to please consider this matter. Denial of this benefit will again result in miscarriage of justice to SBI retirees. SBI Y engagement has always been a benevolent employer. We hope this
magnanimity will be extended this time. With regards, yours faithfully, Deepak Kumar Basu, General Secretary, G.K. Gandhi, General Secretary Sri D.K. Basu, Sri R. Chhabria, Treasurer and J.K. शाह। ये था। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।